Okay. Now today we will continue with the last experiment. Okay, whatever we have started. Let me share the screen, and please make sure that you are also ready with your last work. Okay, so can you able to see Divya? Yes, sir. Okay, so I have also given you the PPT yesterday, so you can able to do your assignment. Okay, assignment के लिए आपको yesterday I have shared the PPTs, right? Now we reach up to this level where we can able to connect our SSH with the Docker, and now we are supposed to execute the Docker command. Okay, so now you open your mobile term. Please open your mobile term, and let's open your screen so that you can able to see. Yes, now what you can do, you already got this, right? Now see, yesterday if you can remember, right, that I have not given the bookmark name. Okay, so that's why I got like this name. Okay, so you might have given the correct name like Docker under hyphen machine or like that, um, तो एडवांस एसएसएच में किया था, आपको याद है? इंशा, हेलो, इंशा Yes, इज sir. देयर? Yes. Yes, sir. Yeah. हाँ, ओके, इंशा भी तू फीडबैक दे मेरे को, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे, हाँ. सो Yes, sir. यस्टरडे वी डिड इट. ओके, सो एडवांस टैब में लास्ट में एक टैब था बुक मार्क करके, उधर हम लोग ने नाम दिया था, तो मेरा गलती से वो रह गया था. So now what I will do, I will just double click on it and your machine will get connected to your AWS directly. So you need not to again, set up everything and you do the things. So just see that your IP address, and you open your uh, Amazon also, AWS also. Please do this and check whatever the IP address, private IP address of this is there. Same thing you are also giving. अरे 1 सेकंड, हाँ, मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग. Yes, I mean, so I am sharing my screen now. Insha, Yes, sir. yes, you can check like this that whatever IP address that you are having 172.31 dot, जो मेरा अभी IP address है, ये देखो वो करेक्ट है 163. सो नाउ आई हैव कनेक्टेड विद दिस. सो मुझे कुछ नहीं करने का है, वो खाली सेशन को डबल क्लिक करने का. सो इट विल डायरेक्टली गेट कनेक्टेड टू our AWS. Is it correct? Up to this much? Yes, Divya. Hello, Insha. Yes, sir. Yes. Huh? Okay, okay. So this much we have reached. Now let's do the Docker command. So obviously the first Docker command already we have seen, that is nothing but what, first of all, you should go to the super user, so sudo su, and then you can check Docker version. Already we have installed the Docker, and we have already got this sh file, right? And that shell file we have run it. So we need not to do that repetition for this session, right?
तो आपके पास एक 10-12 सेशन है, उसमें से एक सेशन में ऑलरेडी आपने वो डॉकर इंस्टॉल किया ही है, तो वापस डॉकर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है. सो यू कैन चेक दैट डॉकर वर्जन, राइट. सो आई विल क्लियर माय स्क्रीन. सो डॉकर हाइफन वर्जन, sorry, spelling mistake. Docker. So Docker version. So you can check. Already you have installed the Docker. So right, this is there. Now next, we will go ahead with this. Now already that you got this Docker Hub, right, account. Okay, and if you see that the images, many images are there. For example, MySQL, HTTPD, or post office protocol, or like that. So many images of so many softwares are there, and already images are there, right, inside this Docker, right. So what we will do, we will pull that particular image. We will pull that particular image. So already it. Okay. So if you go to the Docker Hub, right, you are logged in. Okay, so you can just check the if you just give the command, or this is the command. If you can see Docker Hub, so whatever images are there, whatever images, if you want to install PostgreSQL, or whatever images software you want, okay, that you can able to put it over here, and you will get the list of all repositories, and whatever repository if you want to have, right, you can able to pull it from there. So the command is also given it over here, docker pull mysql. So what we will do, we will just give this command, and let's check whether we can able to get it or no. So docker pull mysql. So I will put it over here in the chat box. You can give it over here, right? So docker pull mysql, just put enter, and you can see you can able to pull the mysql image in the docker, and whatever it is doing, it is in the cloud only. We are not doing it in our local host system at all. Okay, so that is the advantage what we are using mobex. काय झालं प्रथम? अरे नेटवर्क गेलं ना माझ्या, म्हणून नाही, आता नाही युट्यूब बघायचं बाबा, बस इकडे. सगळी मुलं आहेत ती हसतील, जात बस बस. येस, ओके, सॉरी हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया. So docker pull mysql. So I think you did with this. Okay, so you got this docker image. Now let's go ahead with, we can able to pull the docker httpd also. So just pull it, docker httpd. Again I will put it over here. Docker httpd. Get this image also. Okay, now you have got two images with you, right? So now what we are going to do, to make this image containerized, right? So you have to run the docker image, and how you are going to run the docker image is as follows, right? So if you just check, give the command docker images, give the command docker images, and you can able to see. देखो कितना फटाक से, यानी 514 MB, 138 MB, राइट. सो इतना MB फाइल जो है, सो विद इन फ्यू सेकंड यू कैन एबल टू क्रिएट एन इमेज एंड यू कैन पुल इट. ओके, कितना फटाक हो रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ AWS. दैट्स व्हाई इट इज रनिंग वेरी क्विकली. Okay, so MySQL, HTTPD, so whatever is there, you can able to see there is image ID, right? So we have to make sure that docker images, this is also one of the command. So देखो, you can able to give the list of docker commands ki if anybody asks you, even the external asks you what commands you studied for docker. So you can able to list out, docker version, docker pull, then docker images, like that. Okay, so you just make sure that these commands. Obviously you are going to do it. Okay, and I also written it over here, so don't worry about it. So now how can you able to put it in container, right? So whatever repository that you are having,
like MySQL and this thing, you have got this image ID. Okay, so image ID हम लोग को पकड़ के we can able to put it in bash. That means you are going to go for the this thing like uh, we are going to put that image into container. So how you are going to do it, so the command is this docker, and then say you have to run it, and -it is nothing but interactive, right? Interactive. Okay, and we are supposed to write the number of image ID. So image ID is what? C8C. So 3 digits is sufficient for us to put the whole image into the container. So you need not to the copy paste the whole image ID, right? So 3 number sufficient, and just put a bash, right? Just put a bash. Now you can see see the output of this particular command. What happened, right? The whole image, now you can see HTTPD is nothing but your Apache, right? And this image now you have put it in the container, यानी आपका ये container start हुआ. You can just check the container ID. Now you are in container ID. इसी देखो आपका ये container चालू हो गया, right? And you are now inside that container Apache 2, यानी आप container के अंदर आ गए. Now you are in container. So how you did it, right? First of all, we install the Docker, then we pull the images from the Docker using Docker pull images, right? Then we list out all the images, whatever we have pulled it out, and one by one we are going to put it in the container. So container के डालने के लिए what the command is docker run. So you are going to run that, and -it is there. It is nothing but interactive. Image ID, the whole image ID you need not to give, only 3 digits, right? And put a bash, right? So if you put like this, then you can see now your container has been started. Okay, ये इधर तक आपको मालूम पड़ा, right? And now what we will do, to see कि whether how many containers are started. So मैं क्या करता हूँ देखो, हाँ, I will just right click over here and I will say duplicate tab, right? यानी सेम सेशन का मैं और एक टैब बना रहा हूँ, because I would like to check, right, how many containers I have to write. So I have to first go to the sudo super user करने का है तो ही चलेगा, right? And here I will say docker ps, docker -ps. One second, what is the command? Docker ps only. So docker ps, yes. So see that the command is docker ps. You can just see what I did. Insha, are you with me? Yes, sir. हाँ, मैं क्या किया मैंने कि मैंने डॉकर इधर रन किया, राइट? और कंटेनर को मैंने पुट किया उधर. नाउ राइट क्लिक किया, मैंने डुप्लीकेट टैब बनाया तो सेम सेशन का टैब चालू हो गया इधर, राइट? सो आई हैव टू चेक कि द हाउ मेनी कंटेनर्स आई हैव क्रिएटेड, और यू कैन से हाउ मेनी कंटेनर्स आई हैव ओपनड, राइट? सो वो मुझे देखने का है, तो यू कैन जस्ट चेक द कंटेनर आईडी. यू कैन चेक, देखो कंटेनर आईडी F991F like this. Okay, so I can have more than one containers, right? So ये एक कंटेनर हो गया. So जिसमें आप देखो कि ये कंटेनर आईडी है, you can just check over here that docker ps is the command. Okay, new command now, docker ps. You can able to check the container id. ये देखो container id वो सेम रहेगा आपका जो इधर आपके अंदर है. So that's why I told you, you are now inside the container. So कौन से सबसे container है? So you can just check. See, container id is this. Image is this. So again here you need not to have the whole id, image id. Okay, so इधर तक हो गया complete. इंशा complete हो गया. Yes, sir. हाँ, दिव्या. नाही सर अजून करते. तेजस समृद्ध, तेजस. हाँ बोल अभी कौन पूछ रहा है? हाँ सर, मी हर्षल. सर मला एरर येतो ऍक्च्युली डॉकर पूल मायस्क्यूल त्या कमांड वरती.
तू डॉकर हब मध्ये तुझं डॉकर पूल मायस्क्यूएल मध्ये एरर येतोय का तुला? हाँ सर. तुझं डॉकर याच्यामध्ये हब मध्ये तुझं अकाउंट आहे ना? नहीं सर एक्चुअली. हा मग कर ना मग hub.docker.com. ओके सर. हेलो सर। हाँ सर हब. सर मुझे हाँ भी यस एरर बोला. आ रहा है डॉकर फुल माई एसक्यूएल में। ये परमिशन अकाउंट देना है। क्रिएट किया क्या? हाँ क्रिएट किया क्रिएट किया क्या अकाउंट। अकाउंट? हाँ किया। नहीं अकाउंट क्रिएट किया तो परमिशन डिनाइड ऐसा नहीं आना चाहिए. कौन कौन बोलता है? हेलो कौन बोल रहा है? खुशी। खुशी. कैन यू एबल टू शेयर योर स्क्रीन? सर मुझे भी एक डाउट था, व्हाट आफ्टर डॉकर इमेजेस, उसके बाद क्या करना है? हाँ 1 सेकंड. आफ्टर डॉकर इमेजेस पे आपने मालूम पड़ा, देन यू हैव टू गो रन योर दिस कंटेनर. कंटेनर को आपको वो इमेज को कंटेनर पे लाने का है. सो टू पुट द इमेज इनटू कंटेनर वी गॉट दिस कमांड डॉकर रन -it. it is nothing but interactive mode. The image id you have to write just first 3 characters. सो माई एसक्यूएल और HTTPD कौन सा भी ले लो, मैंने HTTPD लिया है. एंड बैश ऐसा कमांड डालने का. सो दिस कमांड यू हैव टू पुट इट आफ्टर डॉकर इमेज. सो आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट दिस. सो नाउ यू आर इन कंटेनर. अगर आपको अपाचे 2 और ये जो आया है दिस आईडी इज नथिंग बट योर कंटेनर आईडी. अगर ये प्रॉपरली आया रहेगा प्रॉम्प्ट, सो प्रॉम्प्ट बराबर आया है उसका मतलब है यू आर नाउ इन कंटेनर. तो दिस इज योर कंटेनर आईडी. सो कंटेनर आईडी ये है, यही है. और कितना कंटेनर आईडी अभी तक रन हो रहा है, राइट? तो हम लोग को देखने का है. तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, दिस द होल विंडो आई राइट क्लिक ओवर हियर एंड से डुप्लीकेट टैब. मैंने डुप्लीकेट टैब मारा. सो सेम सेशन का नया टैब ओपन हो गया. सेम सेशन इज सेम, राइट? सेशन इज नॉट डिफरेंट. तो एक नया टैब ओपन हो गया, डुप्लीकेट टैब. एंड ओवर हियर sudo su करके पहले हम लोग ने अपने यूजर पे गए ubuntu पे एंड जस्ट गिव द कमांड docker ps. Now docker ps what it will retrieve me, it will give me the all the container ids which are running now. तो अभी के लिए तो हम लोग ने एक ही रन किया है ना, डॉकर पे एक ही कंटेनर रन किया है. सो दैट कंटेनर इज नथिंग बट आवर अपाचे. सो ये वाला. So you can just check ये container ID and over here you can if you see this ID both are same. So this is nothing but container ID, right? So इधर तक हम लोग आ गए docker ps. दिव्या झालं का? नाही सर, मला स्टार्टिंगलाच काहीतरी एरर येतंय, मी करते. इंशा तू किधर तक आ गई? सर आपके ही साथ. मेरे साथ में है ना? यस यस सर. सर कैन यू शो द प्रीवियस टाइम? हाँ ये है ना. Before this docker pool mysql and you have to create that particular hub dot और ये login भी करके रखो. आई थिंक इसके वजह से आपको वो परमिशन एरर ऐसा आ रहा है क्या, जस्ट यू कैन चेक इट आउट. ओके hub.docker.com, right? This is a website that we already know, hub.docker.com, and you already got this account. तो अकाउंट खाली लॉगिन करके रखो एंड देन यू कैन गिव द कमांड. अगर आपको एरर आ रहा है तो एक्चुअली नहीं आना चाहिए, बट इट सीम्स दैट इफ इट इज गिविंग द रिस्ट्रिक्शन कि आप नहीं पुल कर सकते. पुल करना है तो आई थिंक यू हैव टू ओपन योर अकाउंट, ऐसा रहेगा. तो यू ओपन द अकाउंट. इज इट करेक्ट इंशा? सर एक्चुअली मेरा अकाउंट भी साइन इन नहीं है बट वो हो गया. हाँ तो ठीक है. तो एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट सपोज अगर रिस्ट्रिक्शन आ रहा है तो ऐसा करके देखो, देयर इज वन अल्टरनेटिव, है ना? सर आई गेस वो सुपर यूजर में जब जाएंगे तभी होगा, बिकॉज मेरे को भी वो एरर आ रहा था परमिशन नहीं, लेकिन डिनाइड करके. सुपर यूजर में अभी डॉकर वर्जन आपने कमांड कैसे दिया फिर, है ना? यू आर इन द सुपर यूजर ओनली ना. यस यस. तो इफ यू डीड विद दिस देन पुल तो आना ही चाहिए. अगर उसमें प्रॉब्लम है तो ये वाला सोल्यूशन है, ऐसा यानी दिस इज जस्ट ट्रायल एंड एरर विद व्हाट वी आर डूइंग. लेकिन डॉकर वर्जन नहीं आया तो ऑब्वियसली यू शुड गो इन द सुपर यूजर. ओके
जाएंगे थोड़ा सा आगे इंशा। यस सर, बट बाकी सबका हाँ पता नहीं। रहने देना रहने, हाँ ठीक है ना, वेट वी विल वेट ना, वी हैव गॉट टाइम, डोंट वरी। यस यस। हाँ आता तो असीम, असीम असीम तेरे को आया क्या? यस सर आया। आ गया ना? सो ये इधर तक आ गए ना? डॉक्टर पीएस में आपको दिख रहा है ना कंटेनर आईडी ओपन हुआ करके वगैरह? यस सर। हाँ हाँ बस बस इधर तक आ गया। और अजून और किसने पूछा था? तेजस ने पूछा था क्या? तेजस सम्राट कोण आहे तो? नाही सर, नाही सर, मी नाही शिकलो. नाही ना? तुझं आलं का पण? नाही सर, ते माझं ऍक्च्युली कालचं ते काय ते एरर येत होतं, मी ते परत मला करावं लागलं सगळं सेटअप. अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है माँ। और किसी को कुछ अभी तक पूछने का है क्या? आगे बढ़ते हैं, कैसा करने का? हेलो, अगेन आई विल कम बैक टू इंशा ओनली। इंशा सर मुझे तो चलेगा मगर बाकी सबका नहीं पता। अरे नहीं पता, अभी मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। हा सर. हाँ सर बोल तो बोल, तोच येतोय कुठला? सो गॉट रिस्ट्रिक्शन? परमिशन. मी आता हब डॉट डॉकर वरती अकाउंट पण बनवलं सर. अच्छा बनवलं का? हा सर. तर तुझं स्क्रीन शेअर करतो। येस सर. हाँ अच्छा, हर्षल पाटील, ओके। हाँ हाँ हर्षल, हाँ इकडे स्युडो सू कर, स्युडो सू। ओके क्लियर, स्क्रीन स्क्रीन क्लियर कर ना, क्लियर कर ना, काय सर? स्क्रीन क्लियर कर, CLEAR क्लियर, क्लियर टाईप कर इकडे, म्हणजे ते स्क्रीन क्लिअर होईल। हा बस, ओके आता लिह इकडे डॉकर हायफन हायफन वर्जन दे ना, फुल इमेज नको लिहू, पहिले हायफन वर्जन दे ना, म्हणजे हा सर मी डॉकर। क्लिक केलं सर, ते आहे सर. आपण बघ ना परत एकदा, हा करेक्ट, व्हेरी नाईस। आता कर डॉकर पुल PULL, हा बघ आता झालं ना रे? हा सर झालं. मगाशी काय होतं ते स्युडोसू नसेल बहुतेक, है ना? हा सर सुडोसूनी केलं होतं. हा मग तेच ना, आता कोणीतरी विचारलं बघ, असेंब्लीत मला वाटले विचारलेलं की स्युडोसू केलं असं ना, आता होईल, काय प्रॉब्लेम नाही। हा हा ओके सर, थँक्यू. दोन्ही कर, हा दोन्ही कर, मी तुला वेळ देतो ना, टेन्शन नको घेऊ, आहे आपल्याकडे वेळ आहे, राहून दे ना, ते स्क्रीन ओपन कर ना। हा आता डॉकर पूल HTTPD कर, डॉकर पूल पूल HTTPD डी का सर? DD, हा बस एंटर होऊन दे। HTTPD म्हणजे काय माहिती आहे ना, ते याचं अपाचेचं हे आहे, प्रोटोकॉल आहे तो। हा ठीक आहे, आता येस. झालं। आता इकडे आपल्याला डॉकर इमेजेस, डॉकर स्पेस इमेजेस, आपल्याला इमेजेस बघायचे आहेत की आता तू पूल केलेला आहे ना इमेजेस, सो दिस 2 इमेजेस आर शुड बी विथ यू, ओके। 2 इमेजेस आहेत। आता काय कर माहिती आहे, या वरच्या टॅबला राईट क्लिक कर, हा थांब, हा ओके ओके, परत त्या तुझ्या पहिल्या टॅबला जा, पहिल्या टॅबला जा, अजून आपण हे इमेज कंटेनरला टाकली नाही ना। येस सर. आता इकडे कमांड आहे, डॉकर रन रन स्पेस -IT, हायफन हायफन म्हणजे मायनस, सॉरी सर. -IT म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह स्पेस स्पेस, आणि HTTPD चा काय तुझा आहे? C8 कुठला आहे? हा पहिले 3 डिजिट, पहिल्या 3 डिजिटच लिहायचे। C8C. हा बस एंटर, बॅश बॅश, सॉरी, अरे 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 सॉरी, परत परत लिह, कंट्रोल C, कंट्रोल D, एक्झिट, आता येऊन दे error. आला का? आलं हा सर. ठीक, हा स्क्रीन क्लिअर कर स्क्रीन, आता राहून दे सर डॉकर, हा बस डॉकर रन -IT
C8C bash BASH स्पेस. हा आता बरोबर आलं. एंटर. बस ओके. आता बघ, आता हा तुझा रूट @ जो आयडी आहे ना, दॅट इज युअर कंटेनर आयडी. नाव यू आर इन कंटेनर. ओके. ओके सर. हा आता मला चेक करायचं की हा कंटेनर आयडी आहे का नाही. हा तो यू ओपन द न्यू टॅब. न्यू टॅब मध्ये क्लिक कर. हा sudo su सुपर युजर मध्ये जा. ओके. आणि कमांड आहे डॉकर PS. डॉकर स्पेस PS. हा बस हा बघ. ओके. सो ओके हा सर. तुझा कंटेनर ओपन झालाय. ओके. हा ठीक आहे. आता स्क्रीन अनशेअर कर म्हणजे मग आपण पुढे जाऊया. ओके. अनशेअर ना. ठीक है. इंशा अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है. हेलो. यस सर, यस सर. ओके. हाँ. सो नाउ इधर तक हम लोग परफेक्टली आ गए कि भाई कौन सा PS है. नाउ लेट्स गो फर्दर. तो ओके सी एक ऐसा कमांड है कि जस्ट यू वांट टू चेक वेदर यू आर इन you are where okay, so you name -a ऐसा एक कमांड है. दिस इज नॉट डॉकर कमांड. दिस इज जस्ट चेकिंग दैट यू आर इन विच सर्वर और आप कौन से इसमें हो. आप लिनक्स सर्वर में हो अभी. वेर आर यू ऐसा. वेर आर यू. वेर आर यू गिव द कमांड. अरे मैंने इसमें क्या पढ़ा हो गया. सर मेरा भी सेम आया. मेरा तो कैसा है, मेरा हॉटस्पॉट पे चल रहा है, इसके लिए मे भी कभी कभी लॉस हो गया ना तो प्रॉब्लम आता है. क्लियर sudo su and कमांड काय सांगितलं रे. ये युनेम -a करेक्ट. यस यस सर. युनेम -a. सी युनेम -a. हाँ. तो यूनेम -a में क्या है ना कि आपको जो आपका जो सर्वर कनेक्टेड है ना. सी दिस IP एड्रेस AWS Ubuntu अपना यूजर नेम राइट एंड यू आर नाउ इन लिनक्स सर्वर. ओके. तो ये कमांड खाली ध्यान में रखो कि अभी कुछ गड़बड़ हो गया ना बीच में तो ये वाला कमांड चलाने का. तो एक्चुअली दिस वॉट एवर आई हैव गिवन इट टू यू, आई हैव ट्राइड दिस, लेकिन वो परफेक्टली वापस करना पड़ता है. ओके. And if you want to come back from container to this, right, so there is a command called as exit. Okay. So what we will do to stop the container. So you are in container, right? Now you are in container. Is it correct, Insha? Hello. नो सर, नाउ वी आर. अच्छा हाँ, इसमें वी आर इन कंटेनर. हाँ, here ना. Here we are in Yes. container, correct? यस यस. Apache 2. Okay. So to come back from container. अरे ये बंद ही हो गया. नेटवर्क होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए. वो कंटेनर पे है क्या. So Docker PS, we can just check Docker PS. Docker PS is already there. So Docker PS का एक बंद ही हो गया. So let's check how to do it. देखते हैं हम लोग वापस कैसे जाते हैं. And I want to stop the container. तो अभी कंटेनर स्टॉप किया नहीं ना मैंने. हेलो इंशा. हेलो. यस सर. यस सर. ओके. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मेरा नेटवर्क बीच में बंद हो गया तो वो टैब ही बंद हो गया. तो अभी मेरे को इधर व्हाट आई हैव टू डू. डॉकर सर आई गेस इमेजेस नेटवर्क का नहीं था क्योंकि वो मेरा भी बंद हो गया. सेशन. मुझे लगता है सेशन से जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं करते ना तो ऑटोमेटिकली बंद होता है. ऐसा कि तो उसका सेशन टाइम रहेगा है ना. हाँ. दैट इज देयर. ओके दैट इज देयर. करेक्ट दैट इज देयर. लेकिन अभी तो मेरा कंटेनर तो चालू है ना. सो आई हैव टू डू समथिंग. तो व्हाट आई विल डू अगेन मैं रन करने का कोशिश करता हूँ. तो इट मे बी आई मे एंटर इनटू दैट कंटेनर. सी दैट.
exc bash, हाँ करेक्ट। ओके इंशा देखो ये वापस में उधर अंदर चला गया। ओके नाउ हियर इफ आई एम Yes. सेइंग डॉक्टर, तो दो दो नहीं आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। दो दो आ गया देखो, कारण वो मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ हो गया है ना, बिकॉज वो नया कंटेनर आईडी स्टार्ट होता है। ये वाला पहला वाला है ना, दैट इज न्यू सेशन ऑल टुगेदर, न्यू कंटेनर आईडी। ये देखो कंटेनर आईडी अलग हो गया है ना। हाँ सर मेरा भी हेलो वही हुआ। हाँ नहीं Yes, इट्स ओके sir. ना। Yes. उसका हम लोग देखते हैं कि पहला कंटेनर आईडी का है कुछ तो आरएम करके कमांड है। आई विल चेक दैट, वी विल चेक दैट। ओके तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हाउ टू एग्जिट फ्रॉम दिस। सो इफ आई एग्जिट दिस अगेन आई विल कम बैक ओवर हियर, राइट। अभी ज्यादा टाइम इधर रुको मत, ओके नहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो उधर कंटेनर पे करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट यू विल डू, एग्जिट कमांड दे दो। exit command is to come back from container to the docker, container to the root you can say. So now if you check docker ps, अगर आपके बाजू में docker ps कमांड या सीरीज, वो पहले वाला ही रहेगा। अभी का जो कंटेनर आईडी आपने ओपन किया था वो बंद हो गया, करेक्ट। दिव्या इधर तक पहुंच गई? नहीं दिव्याचा अजून प्रॉब्लेम है। इंशा तू पहुंच गई क्या इधर Yes. तक? Yes, sir. हाँ ठीक है ना, यानी इधर तक तो मालूम पड़ा। लेट्स चेक previous one also. Okay, to come out the container there is one more thing, you know. One second. There is one command like docker ps hyphen a. ये command है docker ps hyphen a. Okay, and this command you can check. See, you can check, you know कि हाइफन ए का मतलब क्या होता है मालूम है? लॉग फाइल हम लोग ने दिया था ना वो गिट में, जैसे लॉग है वैसे इधर हम लोग को मालूम पड़ेगा कि यू नो द देयर वेयर और देयर वाज वन कंटेनर व्हिच यू एग्जिटेड, राइट, एंड मिनट अगो, करेक्ट। और अभी ये करंटली चालू है। सो यू गॉट दिस कमांड डॉकर पीएस हाइफन ए, इंशा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके हाँ, सो नेक्स्ट गो अहेड। ओके एंड देयर इज वन मोर शॉर्टकट की। ये जो शॉर्टकट की है ना, ये भी आप बाद में कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इफ यू गो इनसाइड दैट कंटेनर देन जस्ट प्रेस कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू टू कम आउट ऑफ द कंटेनर। हेलो Okay, sir. Okay. But अभी आ चुके हैं बाहर। हाँ नहीं नहीं आ चुके, लेकिन अभी देखो अभी मेरे को अभी एक कमांड और एक याद में आ गया। सी डॉकर ये अपना डॉकर पीएस सपोज। ओके लेट्स चेक डॉकर पीएस। डॉकर पीएस से हम लोग को मालूम पड़ा कि ऑलरेडी एक डॉकर चालू है, राइट। एंड नाउ रन किया तो क्या होता है, रन किया तो हम लोग प्रॉब्लम में क्या फंस गए थे, रन किया तो और एक नया कंटेनर आईडी ओपन होता है, बराबर ना दिव्या? दिव्या ने इंशा? Yes, yes, sir. तो अभी मेरे को इसके अंदर जाने का है, इसके डॉकर एक कंटेनर के अंदर जाने का है ना। तो व्हाट इज द कमांड, यू नो, डॉकर एग्जीक्यूट, लेट्स ट्राई दिस, हाइफन आईटी एंड C8C and bash. C8C नहीं रहेगा, what is the command? C8C नहीं ना, what is that? Container ID F9. F9 is there. F99 ये कमांड है। ओ ज्यादा यार, F9N and bash. Just give this command. ये देखो अभी हम लोग उसके अंदर आ गए, देखो now it is correct. This is the command docker exec it F99. So कंटेनर आईडी देने का, so ये वाला 3 डिजिट देने का, ये वाला इमेज नहीं देने का। container id you have to give it over here and bash. Now this will show that even though your session has been exited, right, previously हम लोग ने session आउट हो गया तो हम लोग ने कट किया था। सो लेकिन अपना कंटेनर तो वैसे ही था ना, यानी रनिंग ही था, रन मोड पे ही था। सो यू टू एंटर इनटू द
to enter in the container we got the command exec, and to run new container, नया container ही बनाने का है with the same image id, then we got a command docker run. Is it correct, Divya? Yes, sir. हाँ, देखो अभी ये इधर तक आ गए. नाउ यू प्रेस कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू. ये देखो कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू किया तो हम लोग आउट ऑफ द कंटेनर आए, समझा. बट वी आर नॉट एग्जिटेड, वी आर नॉट एग्जिटेड फ्रॉम दैट कंटेनर. यू कैन चेक विद दिस कमांड ps-a. सी, मैं खाली वो कंटेनर से बाहर आ गया लेकिन मैंने वापस एग्जिट नहीं किया. राइट, कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू, दिस शॉर्टकट की इज जस्ट कम फ्रॉम कंटेनर टू द योर अपन प्रॉम्प्ट, राइट. कंटेनर से प्रॉम्प्ट पे आने के लिए कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू ये शॉर्टकट की है. बट इट डजंट मीन दैट आई हैव एग्जिटेड दैट कंटेनर. तो वापस एग्जिट करने का तो मेरे को उसके अंदर जाना पड़ेगा वापस. सो अगेन यू गो इनटू इट बाय गिविंग द कमांड docker exec. इफ आई प्रेस एग्जिट ओवर हियर, एग्जिट मैंने इधर टाइप किया, एग्जिट मैंने टाइप किया. नाउ यू कैन चेक docker ps. अभी आप docker ps चेक करो तो both the containers are exited. ये तो उसके अंदर ही है docker ps. docker, sorry, spelling wrong. एग्जिट तो है, so why this is not exited? So we can go over there again. I need to do this. F99 exit तो हुआ है, so why it is not doing this? Have you tried this? Hello? यस Yes, sir. Exit नहीं आ रहा है. एग्जिट नहीं होते ना. मेरा हो गया एग्जिट. एग्जिट हो गया क्या? नहीं, हम लोग हाँ. का वो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, देखते हैं. 1 सेकंड, देयर इज वन मोर कमांड. वो रिमूव करके और एक कमांड है, ये देखो, टू स्टॉप द कंटेनर, ये वाला कमांड है. तो ये वाला कमांड भी हम लोग चेक करते हैं. डॉकर स्टॉप, लेट्स चेक. डॉकर स्टॉप and just give this f-double-e, f99, sorry, f99. Let's check this. f99 बंद हो गया तो शायद से. लेट्स चेक once again docker ps-a करके. हाँ, नाउ सी एग्जिट हो गया रे. हेलो इंशा. Yes, sir. हो गया. हाँ, तो ये डॉकर स्टॉप कमांड है. डॉकर स्टॉप f99. ओके, तो वापस मुझे लगता है वापस आप लोग अंदर गए और एग्जिट दबाया तो वो एग्जिट होता ही नहीं है. तो नाउ इट इज प्रूव्ड, राइट. हेलो. Yes, sir. ओके, बस. सो ये सब कमांड्स है. सो दिस कमांड्स विल कंप्लीट योर एक्सपेरिमेंट नंबर 4. एक्सपेरिमेंट नंबर 4. तो ये वाला हो गया पूरा. ओके, एग्जीक्यूट डॉकर कमांड्स टू मैनेज इमेजेस एंड इंटरैक्ट विद द कंटेनर. इसमें अभी पूरे एक्सपेरिमेंट में कुछ भी डाउट है? हेलो इंशा. No, sir. मुझे नहीं. ओके, और किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क. ओके, आई थिंक किसी ने कोई पूछ नहीं रहा है, इसका मतलब है एक तो सब लोग प्रॉपर कर रहे हैं. हाँ, बोला. सर डॉकर पीएस नंतर काय करायचं होतं? डॉकर पीएस नंतर आपण भरपूर काय काय केलं. म्हणजे डॉकर पीएस म्हणजे पहिले डॉकर पीएस का? हो. आपलं हे बघ ना, हे माझी पीडीएफ फाईल ओपन कर ना. हां सर. हे बघ एकदम स्टार्टिंगला डॉकर पीएस
आता कुठपर्यंत तू पोहोचलेस काय माहिती, कुठपर्यंत पोहोचले तू? सर डुप्लिकेट डॉक्टर पी करून एस. डॉक्टर पीएस केलं नंतर हा एक्झिट मग केलं डॉक्टर पी एस ए कर, डॉक्टर पी एस ए करून बघ. डॉक्टर पी एस ए कर, त्याच्यामध्ये तुला कळेल की स्टेटस काय. डॉक्टर तू पीएस. चेक द स्टेटस ऑफ डॉक्टर, यू गॉट दिस हा दिस थिंग सर राईट. केलं. हा बस, मग त्याच्यामध्ये तुला दोन्ही रनिंगच दिसेल ना, दोन्ही किंवा एक जे काय असेल ते. सर एक्झिटेड पण लिहून येत आहे 6 मिनिट आधी, कारण मी एक्झिट केला होता. हा हा, आणि अजून एक येते ना. हा ओके, मग हे सर शॉर्टकट किती आहे ना, कंटेनर मध्ये जायचं आहे तुला. इफ यू वॉन्ट टू गो टू द कम आउट ऑफ द कंटेनर, कंटेनर मध्ये जायचं असेल तर काय करशील तू? हाऊ टू गो इनसाइड द कंटेनर? इन्शा, कॅन यू टेल मी? Yes, sir. Docker exec. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. डॉक्टर डॉक्टर नाही, डॉक्टर Docker, डॉक्कर Docker. हा एक्झिक्यूट, डॉकर Yes. एक्झिक्यूट हायफन आय टी. ओके, हा हॅलो बोल. हेलो हेलो इंशा. Yes, sir. हाँ, इधर तक समझ में आ गया ना? एंड दिव्या, व्हाट यू डू, दिव्या यू फॉलो दिस. ओके, ये जो मैंने पीडीएफ ओके फाइल सर. बनाया ना, ये फॉलो कर. और इसमें अगर वापस कोई डाउट आया ना तो मुझे फोन किया तो भी चलेगा, राइट? गूगल मीट लिया तो भी चलेगा, इट इज अप टू यू. हाँ हा सर चालेल. ओके, नॉट ओनली दिव्या. सी, दिव्या इंशा, खाली मैं उनका दोनों का नाम ले रहा हूँ. इट डजंट मीन दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद ओनली बोथ दिस टू पर्सन, ऐसा नहीं है. ऑल द स्टूडेंट्स आर वेलकम. कोई भी स्टूडेंट रहेगा जिसको अभी तक कुछ समझा नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लीज टेल मी आफ्टर दिस लेक्चर. यू कैन कॉल मी, सर ऐसा है वैसा है, अभी क्या करने का, कैसे करने का, राइट? लेकिन प्लीज डोंट वेट, डोंट स्टक समवेअर एल्स की सर मला काहीच येत नाही आता मी काय करू, ऐसा करो मत. कोई किधर भी स्टॉक हो, वी विल सॉल्व, और वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. डोंट वरी, राइट? सर राइट मेक. हाँ, सर या लेक्चरची रेकॉर्डिंग मिळेल का आपल्याला? ह्या लेक्चरची रेकॉर्डिंग, हा चालेल ना. सर चालेल ना, कालचं आणि चालेल. आजच्या जे प्रॅक्टिकल झाले त्याची रेकॉर्डिंग मिळेल ना? हो हो हो, चालेल ना, काही प्रॉब्लेम. मी सगळं आपल्या हेल्प वगैरे याच्यामध्ये टाकून देतो.
आपल्या युट्यूब चॅनलवरती टाकून देतो, काय प्रॉब्लेम नाही. हो सर चालेल. कालची आणि आजची सर टाका प्लीज, कारण हा 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 थोडं असं परत सांगत बघावं जा, लागेल सर. साईल असं सांगत जा, कळलं का, मध्ये मध्ये काय पाहिजे काय नाही वगैरे. हो सर, ओके? नक्की नक्की. हा, आणि पीडीएफ फाईल मी ज्या बनवल्यात ना, त्या स्वतःच्या मी स्वतः करून मी बनवल्यात, म्हणजे असं काय कुठून इकडनं तिकडं ढापून असं काय केलं नाहीये, समजलं का नाही. सो येस सर, जे येस सर. जे आपण आता करतोय ना, त्याच्याच पीडीएफ फाईल मी स्वतः बनवल्या आणि नंतर मग तुम्हाला मी ते शिकवतोय. सो याच्यामध्ये पण काय डाऊट असेल तुम्ही विचारू शकतात. हा, येस सर, नक्की. ठीक आहे. थँक्यू सर. हा, आता 1-2 मिनिटं. आय विल जस्ट स्टॉप रेकॉर्डिंग, डोंट लिव्ह. ओके.